Today we will take the fourth chapter of political science 12th class, that is alternate centers of power. And in this chapter we will discuss the topic that is composition and expansion of the European Union. As after the end of the bipolar structure of the world politics in the early 90s, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. Thus, in Europe, the European Union, and in Asia, the Association of Southeast Asian Nations, simply we will say ASEAN, have emerged as forces to reckon with. As the Second World War came to an end, many of the European leaders grappled with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? In 1945, the European nations started confronted the ruin of their economies and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो थे, इन्हें ये सवाल पैदा हुआ इनके सामने, क्या हम पुरानी इस दुश्मनी को निभाएंगे या फिर हम यूरोप को हम रिवाइव करेंगे, रिवर्ट करेंगे या रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उन प्रिंसिपलों पर या उन इंस्टीट्यूशंस पर जो कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिव कंसेप्शंस को इंटरनेशनल रिलेशंस में. क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन यूरोपियन पावर्स की इकोनॉमीज खत्म हो चुकी थी. Though the European countries it won the World War II, but they faced the huge losses, especially the economic loss. और उनके सामने ये अब बड़ी चिंता थी, अब बड़ा चैलेंज था कि हम अपनी इकोनॉमीज को कैसे रिवाइव कर सकें. European integration after 1945 was aided by the Cold War, as America extended massive financial help for reviving economies of the Europe under what was called the Marshall Plan. Let's see. After the World War II, US gave financial assistance to European countries. Under the Marshall Plan, the organizations of the European Economic Cooperation was established in 1948. Let's see dear. The establishment of European Union was not all of sudden. The European Union, it evolved from 1948 to 1992. Many steps were taken, and this was the first step towards the establishment of European Union, that is the European Economic Community. And also another step was taken by establishing the Council of Europe on 5th of May 1949. This council was able to perform certain activities
and it was for the political integration as well as the cooperation. And these activities were socio-economic, educational, human rights, media, public health, legal cooperation, and rule of law. This council was established in order to perform these activities. This was the second and important step towards the formation of European Union. And the European Economic Community was established in 1957. It was the another step towards the formation. The European Union formally was established in 1992 as a result of Maastricht Treaty. Remember here, the Maastricht is a city in Netherlands, and this treaty came into effect in 1993. Actually, the European Economic Community, European Economic Community, and also this European Community, इससे पहले इसको यूरोपियन कम्युनिटी कहते थे, यूरोपियन यूनियन नहीं कहा जाता था उसको, और इसको चेंज किया गया इस maastricht ट्रीटी से, और maastricht ट्रीटी ने इसको दो और पिलर्स खड़ा कर दिए इस ऑर्गेनाइजेशन के, as the foundation was thus laid for the common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of single currency. Let's see, this Maastricht Treaty, it was amended 3 times. First in 1999 with the Treaty of Amsterdam. In 2003, this Maastricht Treaty was also amended with the Treaty of Nice. And in 2009, the Treaty of Lisbon replaced the Treaty of Maastricht. Therefore, we can say the European Union was formally established in 1992. Okay? And the headquarters of the European Union, they are at Brussels in Belgium. The European Union, it covers 3 pillars. 3 pillars को ये cover करते हैं. These pillars are European Coal and Steel Community, established in 1951. European Economic Community, और we may say इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं European Common Market, established in 1957, and also European Atomic Energy Community, established in 1958. This European Union, it covers these 3 main communities. These are the 3 main pillars of the European Union. Okay, now expansion of European Union, कि ये expand कैसे हो गया? It was the establishment, or we may say the composition of the European Union. Now let's see how it was expanded. First of all, the European Union, it was the 6-member bloc, but later on it became the 12-member bloc from 1951 to 1950. 1951 to 1995, it was the 12-member bloc. 73 में इसके और 73, 85
में और इसमें ऐड हो गए। पहले ये 6 थे और अब ये 12 मेंबर ब्लॉक बन गया इन 1995। 1995 में 3 स्टेट्स ने और ज्वाइन किया, स्वीडन, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रिया। Therefore, it is stronger than now 15 members और ये 15 members ब्लॉक बन गया। और 2004 में 10 कंट्रीज ने और इसमें ज्वाइन किया। These countries were Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. These joined in the UNO in 2004 and its membership rose up to 25. Again in 2007, after the 3 years of their joining, 2 more countries like Bulgaria and Romania joined. So the membership went to 27, and in 2013, Croatia was included. Thus the total stronger till January 2002. 2020 was 28. But presently there are only 27 because UK withdrew its membership on 31st of January 2020। यानी इस साल के जनवरी में 31st ऑफ जनवरी यूके ने अपनी मेंबरशिप इससे वापस ली और ये इसका अब मेंबर नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कोशिश कर रहा था कि इसको छोड़ने की, लेकिन लास्ट पर यानी 2020 में इसने छोड़ दिया। और जहाँ तक इसके ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है, क्यों और किस लिए इसको बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे दिस इज बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर हम एशियन का देखेंगे, एशिया में जो है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, that is only the economic force or economic integration, but European Union is both political as well as economic organization, or we may say it aims the political or economic integration. The following objectives of ASEAN are as: first of all, to establish an economic and monetary union। एक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन को इस्टेब्लिश करना इसका ऑब्जेक्टिव बन गया। सेकंड, इम्प्लीमेंटिंग कॉमन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, कि जो ये 27 कंट्रीज हैं इनकी सेम और कॉमन एक फॉरेन पॉलिसी होगी। एक तो इनकी अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज हैं, अलग अलग मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी, और दूसरा कि इनकी एक ही पॉलिसी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी of this federation and defense policy, and also it aims to strengthen of its economic and political institutions। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इसके क्या हैं, ये हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, और इनको मजबूत बनाना इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका एम था इस यूरोपियन यूनियन का। एंड ऑल्सो इट्स वन मोर ऑब्जेक्टिव, that is developing relations in the sphere of home affairs and justice। देखो, होम अफेयर्स और जस्टिस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस को, कॉर्डियल रिलेशंस को डेवलप करे, ये भी इसका एक एम था, ऑब्जेक्टिव था। एंड लास्ट वन दैट वाज सिंगल करेंसी,
19 countries among the European Union, or among the members of the European Union, have single currency. 27 मेंबर्स इसमें हैं, लेकिन 19 मेंबर्स जो हैं इसके, 19 कंट्रीज जो हैं उनको एक ही करेंसी है जिसको हम यूरो कहते हैं। जिस तरह से डॉलर है या रुपी है या यन है या रियाल है, इसी तरह से इन्होंने 19 कंट्रीज ने एक ही करेंसी को अपनाया है, अडॉप्ट किया है। उस करेंसी को हम यूरो कहते हैं। And this was about the composition, expansion and its objectives. And inshallah, in the next video we will discuss the organizational structure of European Union। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।